अस्सलाम वालेकुम। आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा, आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, irreversible reactions, and number two, reversible reactions. Those reactions in which products do not react to form the reactants back are called irreversible reactions. For example, if we consider the reaction AgNO3 silver nitrate plus sodium chloride. When silver nitrate reacts with sodium chloride, the products are silver chloride and sodium nitrate. बेटा, आप जानते हो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी इसमें प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिएक्ट बैक टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। अब कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, it gives us ammonia gas. This reaction between nitrogen gas and hydrogen gas to form ammonia. This reaction is reversible reaction. That is, in this reaction, the product ammonia molecules can react back to form the reactants. For reversible reactions, we use the concept of equilibrium. What is equilibrium? Let us see the definition. Equilibrium represents the state of a reversible reaction in which the measurable properties like temperature, pressure, concentration, etc. becomes constant and does not undergo any noticeable change with the passage of time. Equilibrium is defined as the state of reversible reaction when its measurable properties, that is temperature, pressure, concentration, etc. remain constant. Equilibrium is of two types. Number one is physical equilibrium and number two is chemical equilibrium. Types of equilibrium में हम सबसे पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अगर हम एक कंटेनर में वाटर लेंगे, इफ दिस कंटेनर इज ओपन, अगर ये ओपन कंटेनर है, देन वाटर मॉलिक्यूल्स विल एस्केप, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स भाग जाएंगे एंड दे विल मिक्स विद द गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर लेंगे, देन द वाटर मॉलिक्यूल्स will get collected on the surface of liquid, तो यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाएंगे। After some time we will see that the concentration of water vapors and the concentration of liquid water becomes constant. At that time we say that equilibrium is reached. और हम ये भी जानते हैं कि ये जो इवापोरेशन ऑफ वाटर है, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन इवापोरेशन चेंज इनटू वाटर वेपर्स। एट इक्विलिब्रियम the rate of condensation becomes equal to the rate of evaporation and the concentration of water vapors and water molecules becomes constant. Physical equilibrium की एक और example है melting of ice. We know that
melting of ice is a reversible process. Ice changes into water and water changes into ice. In this process, at equilibrium, rate of melting of ice is equal to rate of freezing of water. That is, at equilibrium, concentration of ice and concentration of water will be constant. Now let us discuss some examples of chemical equilibrium. Hydrogen gas reacts with iodine gas to form hydrogen iodide gas. We know in this reaction the product hydrogen iodide dissociates back into hydrogen gas and iodine gas. Hence, it is a reversible reaction. And at equilibrium, concentration of hydrogen gas, concentration of iodine gas, and concentration of hydrogen iodide gas will be constant. Similarly, calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. This is also a reversible reaction. And at equilibrium, concentration of calcium carbonate, concentration of calcium oxide, and concentration of carbon dioxide will be constant. Similarly, preparation of ammonia by Haber process. In this reaction, nitrogen gas reacts with hydrogen gas to form ammonia, and this is a reversible reaction. That is, the product ammonia gas changes back into nitrogen gas and hydrogen gas. At equilibrium, concentration of nitrogen gas, concentration of hydrogen gas, and concentration of ammonia gas will be constant. आगे बढ़ने से पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे. A reaction in which the reactants change into products and the products react back to form the reactants under the same conditions is called a रिवर्सिबल रिएक्शन. यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्ट बैक टू फॉर्म द reactants. A reversible reaction takes place both in forward direction as well as in backward direction under the same conditions. यानी reversible reaction जो होती है it takes place both in forward direction as well as in backward direction. A reversible reaction is represented as, एक reversible reaction को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसकी एग्जांपल्स में अभी हमने 2-3 एग्जांपल्स करी है, तो ये एक एग्जांपल यहाँ से हम फिर करेंगे. नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस. दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन.